Oh my goodness, happy birthday to me! Happy birthday! And lockdown के बीच में हम लोगों को केक कहाँ से मिल गया? Where did you manage a cake from? मिल गया. This was Mama's genius idea. I'm feeling so fast. No. अच्छे से जाएगी. No, मेरी वीडियो भी चल रही है. Happy birthday to you. Happy birthday. Good morning guys. So आज है 29th of March and today is actually my birthday and ये vlog शूट करने से पहले मैंने किसी को आज तक बताया भी नहीं इस चैनल पे कि मेरा बर्थडे कब आता है. But last time when I uploaded a video on my channel I said that in case you guys want to ask any questions हम लोग आज एक Q&A करने वाले हैं. And I think quite interestingly this is probably the first time that I'm doing a Q&A from inside my house, inside my room. So कल रात को मेरे घर पे एक छोटी सी celebration हुई. My sister, my mom, my father they managed a cake out of nowhere. तो ये कुछ छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो आप एक लॉकडाउन वाले बर्थडे से एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट आई वॉज ऑनेस्टली रियली हैप्पी क्योंकि सब कुछ डेकोरेटेड था एंड आई वॉज ऑल्सो फीलिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा. तो मैं भी पूरी तैयार हो गई और पूरा मेकअप वेकअप कर लिया बिकॉज मैंने सोचा और कुछ नहीं तो कम से कम अपना बर्थडे घर के अंदर तो एंजॉय कर ही सकती हूँ. बट जिस वे से द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज टर्निंग इज क्वाइट सैड एंड आई डू नॉट मीन टू बी लिटिल द सिचुएशन एट ऑल. मेरे कुछ फ्रेंड्स जो स्टार्टअप में काम करते हैं वो लोग आज सुबह मुझसे बात कर रहे थे. काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन भी आया एक्चुअली बर्थडे विश करने के लिए. दे वर टेलिंग मी कि हाउ फंडिंग इज़ अ प्रॉब्लम, सैलरीज आर अ प्रॉब्लम, पे कट्स आर अ प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड ओवर. एंड आई थिंक इवन नॉट जस्ट इन स्टार्टअप्स बट इवन इन अदर कंपनीज अदरवाइज. एंड जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं उनके लिए कितनी बड़ी अभी दुविधा चल रही है. एंड इवन सम ऑफ माई क्रिएटर फ्रेंड्स वर रिसेंटली टेलिंग मी हाउ उनको बहुत सारा हेट मिल रहा है इस टाइम पे बिकॉज पीपल आर बिकमिंग अ लिटिल मोर insensitive and this is just a time when everybody is letting out their aggression online. My heart really goes out to everybody who's affected and all everybody's families जिनके घर में patients हैं who are suffering from corona. It's a really heartbreaking situation right now. But I mean, creators like me can only contribute by adding a little bit of positivity to everybody's life and trying to look at the brighter picture. तो अभी भी मैं बैठ के सारे questions sort out कर रही थी यहाँ से वीडियो से भी और मैंने Instagram पे भी काफ़ी सारे लोगों के questions screenshot किए हैं and there are so many questions over here. And the first question is your next tour. So unfortunately keeping the times in mind I think next tour तो मेरा शायद 2-3 महीने तक नहीं होगा बट अभी आपको मेरा रूम टूर मिलने वाला है. So ये है मेरा बेड, ये है उसके बाजू में एक कबर्ड जिसमें also there's all of our equipment, काफ़ी सारा equipment and it all goes into this one drawer alone. Then over here on this side is my favorite place in the room which is my desk and ये वाला area मुझे especially बहुत अच्छा लगता है because it's like a feature area of all of my achievements. That's my sister's photo and अगर आप में से कोई डॉक्टर हु देखता होगा तो you'd know that this is like a police box. यहाँ पे मेरे पास एक white board भी है behind the desktop and I write stuff on this white board. यहाँ ऊपर एक पिन अप बोर्ड है एंड यहाँ पे मैंने लिटरली अपने सारे बोर्डिंग पासेस वगैरह वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है. And this is the place where I mark all my dates. Today is obviously the 29th of March. My desktop. This is actually a new addition to my working space क्योंकि पहले मेरे पास desktop नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक laptop था. And of course the main highlight of this room is my cupboard which I recently organized thanks to all the extra time I have at home right now. How do I forget this? This is the mirror as soon as you enter my room from this door and इसके side में एक plant भी है. So the next question is the best place that you have visited yet. So honestly काफ़ी अच्छी जगह मैं visit कर चुकी हूँ but Namibia for me is very special which is why if you see my highlight table over here उसमें सारे Namibia के artifacts हैं and the reason why it's so special to me is because as a traveler I feel like that is the first time I really grew up and became confident in terms of international driving, in terms of becoming more independent. Like imagine जब मैंने ये channel start किया था तब मैंने McLeodganj से start किया था, मैं वहाँ पे रह रही थी. But we have some really amazing views right here. And उसके बाद going all the way to a country in Africa was really special to me and I think I've really grown up from the whole experience. Okay. Woohoo! Why do most influencers have a manager? Is it really necessary? And your plans? तो हाँ मेरा भी एक business manager है. His name is Neil Gogia. He was a part of our Spain vlog in case you haven't watched it. The reason why a business manager is very important is because that is how you get all the sponsorships and all the money flowing into your channel more easily. Because when you are on social media, चाहे आपकी कोई भी profiles हो, चाहे वो Twitter हो, Instagram हो या फिर YouTube हो,
तो आपको बिजनेस नेचुरली आता ही आता है. देयर विल बी कंपनीज हु विल रीच आउट टू यू एंड टू बी एबल टू नेगोशिएट एंड सेट अ प्राइस एंड टू बी एबल टू बेसिकली हैव अ सीमलेस कम्युनिकेशन, एक मैनेजर होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड उससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट द बिजनेस मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल channel. And you can just focus on doing your creative work, which is what I have been doing for the longest time, and I'm really grateful that Neil is there. Okay, next question is EBC series update. तो अभी हमारी जो next series आने वाली है channel पे is the US series, which is called इस बार अमेरिका. And उस series के बाद हम लोग करेंगे EBC series. I want to be a vlogger, but I am camera shy. सो ये हर किसी के साथ होता है. एवरीबडी इज नेचुरली कैमरा शाय. तो या तो ट्राई एंड गेट ओवर योर फोबिया बाय फेसिंग द कैमरा एज मच एज इज पॉसिबल फॉर यू. चाहे आप फ़ोन वीडियोस बनाएं या टिकटॉक वीडियोस बनाएं या फिर कोई भी प्रकार की वीडियोस बनाएं, तो द ओनली वे यू कैन गेट ओवर दैट फोबिया इज इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मोर एंड स्पीक टू इट मोर ऑफन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर इज, डू यू हैव अ बुक शेल्फ? And yes, in fact, I do have a bookshelf. So what you see over here is my entire bookshelf. Okay, तो वैसे तो इस टाइम पे हमें मिलना नहीं चाहिए, but हिमाद्री घर पे आई है. हिमाद्री, in case you don't know her, guys, what's up? she was just washing her hands actually. So in case you don't know her, we work together. And जब हम लोग office space में, when I had already moved to the office space, so she was also there. And she also has a YouTube channel of her own actually, where she does fashion videos and hauls. Cutest part is that she's got cake. तो मेरा बर्थडे का सेकंड केक आया है एंड मेरा कल रात का केक तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट दिस इज लुकिंग लाइक सच अ गुड केक. थैंक यू सो मच. You're welcome. तो हम लोग वैसे तो प्रिकॉशन ले रहे हैं. शी स्टैंडिंग एट अ 1 meter डिस्टेंस फ्रॉम मी, बट दिस इज सच अ स्वीट जेस्चर. ऑनेस्टली आई वाज़न्ट इवन एक्सपेक्टिंग इट कि मेरे को बर्थडे केक मिलेगा. एंड हिमाद्री इज एक्चुअली माय नेबर. Yeah. We stay in the same building, so that is how she came over. It's not like she's traveled from India. No. Not at all. In fact, you haven't stepped out of your house either, na? Not at all. काटे केक इसी बात पे. Oh, this is so nice. Let me take a picture actually. To you. Thank you. Happy birthday. टेस्ट कैसे देखते हैं? तुमने खुद बेक किया है ना? हाँ, taste test. Oh shit. I have no clue कैसा होना है. मेरे बहुत पेपर है. ऐसे गलत. एक दूसरे को खिलाना है. No. मेरे साइड से आप खा लो. मैं खा रही हूँ. खिला रही हूँ. What is your favorite snack during this lockdown, and happy birthday. Thank you so much. And my favorite snack, I don't think I have a favorite snack as such क्योंकि मैं इतनी snack kind of person नहीं हूँ. I don't usually spend a lot of my time snacking. But if I want to eat something, कई बार मैं केला या कुछ खा लेती हूँ. But currently I am making chai over here because मेरे घर में सब लोग चाय के दीवाने हैं. So I'm making chai for me and my parents. अरे जल गया. Also मेरे vlog के पहले किरदार से मिलिए. That's my mom, everybody. Hi everyone. क्योंकि मेरे को मेरी चाय की आदत ना मम्मी से ही लगी है basically, which is why we have this ritual of drinking tea every single day, twice at least, or more than twice. How has your life been after college? So I think मेरी life after college has been really nice, and I enjoy my life more after school and college. I'm really enjoying the adult phase of my life. मुझे बहुत अच्छा लगता है. And I don't miss college at all. Please don't hate on me for saying this, but it's true. I literally really enjoy being independent and having a career, having something to work towards, much more than being in college and just doing nothing. मतलब obviously पढ़ाई होती थी कॉलेज में, but most of the time in hostel felt like doing nothing. How do you manage to stay positive 24/7 into 365? Love your work. Thank you so much. So the way I manage to remain positive is by always doing some activity or another जिससे मुझे motivation मिले, जिससे मुझे ऐसा लगे कि I've done something productive. थोड़ी सी चाय गिर गई. Why are you always अपने मुँह मियाँ मिठू? Dare to answer this and I take your dare. And it's not like I always praise myself, but मैं एक बहुत ही practical सी advice देती हूँ कि अगर आप social media पे हैं या फिर आप content creation करते हैं, there is nobody else in the world who will hype you up except for you yourself and probably your parents. Even when I started off with YouTube, मेरे parents मेरी videos हर किसी को शेयर करते थे, लाइक रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, अपने खुद के ग्रुप्स पे. एंड आई थिंक इवन आई स्टार्टेड बाय डूइंग दैट इनिशियली. अब तो मैं ऑब्वियसली किसी को नहीं शेयर करती, जिसको देखनी होती है वो देख लेता है.
बट अगर आप अपने आप को हाइप अप नहीं करोगे और अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे तो आप किसी और को वो कॉन्फिडेंस या फिर वो इंस्पिरेशन या फिर वो अपने दिन को पास करने की मोटिवेशन कैसे दे सकते हो? When was the last time you felt unsafe while traveling and how you overcame that situation? So thank you so much for this question because I feel like more people need to hear this for sure. So I think last time मैं जब कॉलेज में थी तो मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ती थी and I used to stay in a hostel and उस टाइम because मेरे पापा आर्मी में थे तो वो अम्बाला में पोस्टेड थे. So I used to take a train from Delhi to go to Ambala sometimes. Every time I used to go visit my parents. तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं ट्रेन में थी and for some reason I did not get an AC class train, so I got a sleeper class train. And वहाँ पे there was a man who was aged. He was really old and he was also perhaps drunk. तो मैं जहाँ पे बैठी थी मेरे बिल्कुल सामने वो आके बैठ गए, that drunk man, and he tried to touch my ankle with his toe. And पहले मुझे लगा शायद गलती से किया, but he did that again. Then he did that again the third time. And after he did that the third time, I realized that this wasn't supposed to happen. And this is not normal. And when I looked up at him, he was also grinning at me, which was a very clear indication that this was a situation where I'm being attacked in some way. So immediately I raised an alarm. मैंने अपने आसपास के पैसेंजर्स को बोला कि इनको यहाँ से बाहर निकलवाओ. एंड पुलिस को बुलाया गया एंड उनको वहाँ से उठाया गया एंड ही वॉज सेंट आउट ऑफ द ट्रेन ऑन द नेक्स्ट स्टेशन. मेरे पापा तो मुझे हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी हो, भीड़ में अगर तुम्हें कोई लगता है कि तुम्हें कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, रेजिंग एन अलार्म इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि एटलीस्ट 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपकी मदद करने के लिए. तो इसी बहाने अब जो हमने 2-3 क्वेश्चंस ले लिए हैं, लेट मी मेक यू मीट द नेक्स्ट किरदार ऑफ दिस व्लॉग. And for that, I'll actually have to interrupt my sister's live session because she does a live every day at 6 because she's a yogi and she's kind of encouraging people to do yoga. We did a Trikonasana and we did a Sarvangasana. Hi! And there she is! Oh my And god! I'm also vlogging! Say hello to my vlog. Hi! What's up? Guys, that's Tuesha and she's doing a live session right Yes. now. Rohan is saying hi, birthday girl. So yes, Tanya is here and Welcome to the vlog, everybody. Turned into a vlog, turned into a live session. yes. Continue. Bye-bye. Bye-bye. So Tuesha, how did you like me hijacking your live session today? Yeah, it was really sweet. It was really cute. I think we had so many birthday wishes coming up. Exactly. And by the way, this is Tuesha's room. This is, yeah. Her very, very peaceful and meditative room. And she goes live every day at 6. So in case you want to join her live, her Instagram is going to be here on the screen. Yeah. So you can join her live session. How you convinced your parents that you wanted to be a travel vlogger? I think ये कहानी तुझे भी नहीं पता कि मैंने actually before even becoming a travel vlogger, how I broke to my parents that I like traveling. So you know when I was in college, I used to travel a lot with my friends and तब मैं बहुत ही ऐसे अतरंगी adventures पे जाती थी. Like we used to suddenly for like trekking and all. I think you know that at least, right? That I used to travel a lot. उत्तराखंड कहीं पे गई थी ना? कहीं पे भी चली जाती थी. And I would never tell parents because मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग approve नहीं करेंगे. And मुझे ऐसा लगता था it's okay if they don't know क्योंकि it's not necessary that you have to share everything. And concealing things is not like lying. It's not the same thing, right? Yeah. ऐसा मुझे लगता था, but I was wrong. I mean, I do not encourage anybody to lie to their parents about traveling anymore. So क्या हुआ कि I was on this trek in doing the Triun ट्रैक, ठीक है, और मैक्लोडगंज से जाता है त्रिउन ट्रैक एंड मेरे साथ मेरे 4 फ्रेंड्स भी थे एंड उस दिन क्या हुआ कि बहुत जोर से स्नो स्टॉर्म होने लग गया एंड व्हाइल वी वर ऑन द ट्रैक, holy shit, yeah, there was a snowstorm. I couldn't see my friends anymore. I was pretty much alone on the trek. और बर्फ पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया, मुझे अपने 1 मीटर आगे तक भी नहीं दिख रहा था और पूरे पहाड़ पे बर्फ पड़ी हुई थी ऑलरेडी. तो जब बर्फ पड़ी होती है पहाड़ पे तो देयर इज दिस वेरी नैरो वे एंड यू हैव नो सपोर्ट वेर यू कैन एक्चुअली क्लेंच ऑन टू. एंड मेरे पास जो शूज थे वो भी स्नो शूज नहीं थे, वो नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज थे. तो मेरे शूज पूरे गीले हो चुके थे एंड वहाँ पे हाइपोथर्मिया होने के भी चांसेस थी बिकॉज मेरे शूज गीले हो चुके थे. Oh my God, मतलब सारी चीजें एक दिन में ही हो गई. सारी चीजें एक दिन में हो गई. और उस टाइम पे मैंने अपने पेरेंट्स को बताया भी नहीं था कि मैं ट्रैवल करने निकली हूँ, मैं कॉलेज में नहीं हूँ, मैं हॉस्टल में नहीं हूँ. रिस्की सिचुएशन है. It was a very risky situation and that day was
व्हेन आई रियलाइज कि अगर मुझे वहाँ पे कुछ हो जाता और मैं उस सिचुएशन में होती तो शायद पेरेंट्स को कोई पता भी नहीं चलता कि मुझे हुआ क्या और मैं कहाँ हूँ. तो मुझे ऐसा लगा उस सिचुएशन के बाद, एंड स्पेशली ऑन दैट ट्रैक, आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग. आई ब्रोक डाउन एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. एंड मैं उस टाइम पे आई थिंक 20 साल की होंगी शायद. हाँ, एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होता है ना तो बहुत डर सा लग जाता है. बहुत डर लगता है. एंड उस टाइम पे मेरे साथ हुआ तो मेरे को सडनली रियलाइज हुआ कि आई कैन नेवर बी लाइंग टू माई पेरेंट्स अगेन अबाउट ट्रैवलिंग. क्योंकि अगर उन्हें पता हो तो एटलीस्ट दे वुड नो कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, और अगर मैं किसी खतरे में होंगी एटलीस्ट I'd be able to tell them openly about it. तो when I got back, I wrote my father a very long email describing everything about my adventures, कि मैंने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, with who, at what point of time. And as soon as I hit the send button, I was so nervous. मुझे लगा कि oh no, अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, ये होगा. But he was very supportive. क्या? Obviously he was angry for some time, but then he later realized कि ठीक है, it's okay. So that is how I told my parents about my traveling experiences. Wow, that is so sweet. तो अभी मेरे बर्थडे की फीस्ट की तैयारियां चल रही है. Meet my dad, everybody. That is my father. He's come with me in one video जो हमने की थी about investing. And right now we are all preparing a dinner. Feast in the making. Feast in the making. तो अभी recently ना मैंने Instagram पे story डाली थी जिसमें मैं पोछा मार रही थी घर पे. So the next question is, we saw you doing pocha stuff. When are we seeing you in your बर्तन धोना vlog? तो मतलब obviously मैं बर्तन धोने में हेल्प तो कर ही रही हूँ घर पे, and that is exactly what I was doing right now. तो मैंने सोचा चलो इससे अच्छा कोई appropriate मौका हो ही नहीं सकता ये question पढ़ने का. Okay, back on the desk. और अभी मैं plan कर रही हूँ live जाना. So let's do this. Hello everybody. We are live and I'm also doing a birthday vlog. So welcome to my vlog everybody. Pinkish storyteller, happy birthday love. Thank you so much. Thank you for all your wishes. मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आज live जाके, because obviously we are also isolated right now. Hi Vishal. Hi Dada. How are you? Okay. Okay Niharika, so nice meeting you. Thank you. I'll take other requests also. Bye. बन रहा है बहुत अच्छा food. मैं क्या बनाऊँ लेकिन इसमें से? Today is your feast, so you enjoy. Wow, this is looking so amazing. So the birthday layout looks good. All thanks to Twesha. यार मतलब this is amazing. How did you manage this decoration? With mama. डिनर टाइम पे एक लास्ट हमारे फैमिली का मेंबर जिससे मैंने अभी तक नहीं मिलवाया. Who is हमारा लानू द बिल्ली. उसको वैसे बहुत कडलिंग अच्छी नहीं लगती. हमारा लाना, he is also a part of our family. Good morning guys. आज एक्चुअली मेरे बर्थडे के एक दिन बाद वाला दिन है, and I had such a beautiful day yesterday, and by sharing this video I do not mean to belittle the situation at all. मुझे पता है कि बाहर पूरे वर्ल्ड ओवर बहुत ही ग्रेव सिचुएशन चल रही है, and we are all facing some kind of a problem in our personal lives or another, and हम लोग कोई भी अपनी खुद की problems अभी compare नहीं कर सकते. I just wanted to share my day because मुझे अपने लाइफ का एक छोटा सा स्लाइस इस चैनल पे शेयर करना था, एंड हो सकता है आगे चल के हम लोग और ऐसे कुछ वीडियोस करें जो घर से होंगी. सो इन केस यू हैव एनी रिकमेंडेशंस फॉर चैलेंजेस, फॉर थिंग्स दैट आई कैन डू फ्रॉम होम, या फिर अगर आपको कुछ स्पेसिफिक देखना होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड विद दिस आई क्लोज द वीडियो राइट हियर एंड सी यू अनदर टाइम फ्रॉम आवर न्यू अपकमिंग सीरीज, इस बार अमेरिका.